Good morning, students. So, we were discussing chapter 1 of history, how, when, and where. Last time we did that how James Mill divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and British period. And it was not accepted by the Indian historians. Now, moving away from the British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. ये आपने वर्ड सुने हुए हैं कि इन हिस्ट्री को हम एंशियंट हिस्ट्री, medieval हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड करके पढ़ते हैं. नाउ दिस डिवीजन ऑल्सो हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स. वाई? बिकॉज जो मॉडर्न पीरियड जिसको बोलते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये बनाया मॉडर्न पीरियड, दैट वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द forces of modernity like science, reason, democracy, liberty and equality. जहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब डेवलप हुआ, उसको मॉडर्न पीरियड बोल दिया. एंड मिडीवल पीरियड वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी व्हेन दीज फीचर्स वर नॉट प्रेजेंट. जब ये साइंस, टेक्नोलॉजी, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी नहीं था, दैट पीरियड वॉज कॉल्ड मिडीवल पीरियड. Ancient period, when the hunter-gatherers lived in the jungles. Now, can we accept this characterization of modern period to describe India? इंडिया को क्या हम मॉडर्न पीरियड बोल सकते हैं ऐसे? बिकॉज इंडिया में मॉडर्न पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल था, एंड अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, नॉर इट वॉज द पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. तो इंडिया के मॉडर्न पीरियड में तो ब्रिटिशर्स का रूल था, तो हम उसको ब्रिटिश मॉडर्न पीरियड नहीं बोलते. मेनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर दिस टू पीरियड ऑफ colonial. So modern period is also called as colonial period in Indian history. Now what is colonial? In this book you will read about the ways when British came to India. उन्होंने कंट्री पे रूल किया, नवाब राजा सबको अपने अंडर कर लिया. हाउ दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू, दे बॉट गुड्स दे वांटेड. उन्होंने क्रॉप्स वो ग्रो करवाते थे जो उनको चाहिए फॉर एक्सपोर्ट. सो ऑल दिस चेंजेस केम इन इंडिया ड्यूरिंग द colonial period. So what is colonization? When the subjugation of one country by another leads to the kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. Subjugation मतलब किसी को अपने अंडर करके रखना. तो जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल तरीके से अपने अंडर रखती है और उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर देती है, वी रेफर टू दिस प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन. इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड. इंडिया में इंग्लैंड ने अपना रूल किया और अपने हिसाब से उसको चलाया. नाउ हाउ डू वी नो? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? Now in this 8th class we will study about the colonial period, which is also called modern period of Indian history. Administration produces records. हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं सारे. ब्रिटिशर्स प्रिजर्व्ड ऑल देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे बिलीव्ड इन कीपिंग परमानेंट रिकॉर्ड्स so that they could be studied properly and used in the future. One important source is British administration. Writing उनके लिए it was very important for them to write all their policies, plans, decisions, agreements. They had to be clearly written. Then and they were debated ताकि बाद में उनकी फ्यूचर में यूज़ के लिए they could be properly studied and debated. They also felt that all the important documents in lectures needed to be preserved, and specialized rooms and institutes like archives and museums were established to preserve these records. Now, और documents लिखता कौन था? These documents were carefully copied and beautifully written by calligraphists. Calligraphists are those people who are specialized in the art of beautiful handwriting. We will do the remaining chapter in our next class.